Good morning, student. Today we teach you what is noun. Let's revise part of speech. Today I will teach you what is part of speech in English. Words are divided into 8 basic classes. They are first noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. We will look into each of them in detail, but keep this in mind that which part of speech a word belongs to depend on the part it plays in a sentence. It can change depending on context. वो चेंज हो जाएगा. किस पे डिपेंड होता है? कॉन्टेक्स्ट पे. जैसे कि एग्जाम्पल है पोस्ट कैन स्केट रियली वेल. ये क्या है? वेल एडवर्ब हो गया. सीना इज नॉट वेल. वेल इसमें भी है लेकिन ये एडजेक्टिव हो गया. वेल वी कुड गो टू शिमला नेक्स्ट समर. ये हो गया है इंटरजेक्शन. हाँ, तो आज हम अभी पढ़े थे, फिर से रिवाइज कर लो एक बार. पार्ट्स ऑफ स्पीच. They are divided into 8 basic classes. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. Therefore, noun. What is noun? Noun are the words used to refer to objects, places, and living things. Some nouns also refer to the feelings and the emotions. Here we know that nouns can be divided into several categories. They are proper and common noun, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल मतलब कि जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन. दे कैन बी रफली illustrated like this table. I made this table for you for better teaching. Noun can be divided into two: proper noun and common noun. Common noun divided into two: countable noun and uncountable noun. अब here countable and uncountable have also two parts. Countable noun have two parts divided into two categories: abstract noun, concrete noun. And uncountable noun also divided into two categories: abstract noun, concrete noun. Here difference between countable and uncountable noun is that in countable noun and abstract noun, in some instances ideas, lies, trouble, these words are used. But in uncountable, humor, love, kindness, dayaluta, darkness, andhera, these words are used. What is proper noun? Proper noun are specific name of people, place, countries, cities, months, day of week. Remember, when you write them, the first letter is al. आप कभी भी किसी जगह का नाम, किसी देश का नाम, किसी सिटी का नाम, किसी महीने का नाम, या किसी सप्ताह का नाम, या किसी ही बड़ी प्लेस का नाम लिखेंगे या किसी का नाम लिखेंगे, तो उसमें पहला अक्षर जो होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है, वो कैपिटल होता है. प्रॉपर नाउन. We know that proper definition of the proper noun. Proper noun are specific name of people, place, countries, cities, months,
days of the week, etc. Remember, when you write them, the first letter is always capital. Common noun. What is common noun? The place of ordinary object, places, things, etc. are called common noun. किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम, प्लेस जगह, स्थान, थिंग्स वस्तु, इन सभी चीजों को कॉमन नाउन कहते हैं. दे कैन बी यूज टू रिफर टू एनी और ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास. ये कि कोई भी मेंबर यूज कर सकता है कॉमन नाउन. आप देखते हैं कॉमन नाउन क्या क्या है. जैसे कि माउंटेन, हिल, स्ट्रीम, रिवर. आप इस रिवर तो हम भी कर सकते हैं यूज, कोई और भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है, कोई रोक नहीं है. लेट्स बी नो फोर्थ नाउन, काउंटेबल नाउन. Most nouns can be counted. They have both singular and plural. They have both singular and plural forms. As the name suggests, nouns that can be counted are called countable nouns. Name suggests nouns that can be counted are called countable nouns. See some examples. Make want to read a book. जो मैक है वो एक बुक को पढ़ना चाहता है. आई गॉट अ बाइसिकल फॉर माई लास्ट बर्थडे. मेरे पिछले बर्थडे पर मुझे साइकिल मिली. अब हम दूसरा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन. एज द नेम सजेस्ट, noun that cannot be counted are called uncountable nouns. They mostly appear in singular form, like rice, wheat, milk, sugar, etc. Let's be know the sixth noun, abstract and concrete noun. Abstract and what is abstract noun? Abstract nouns are the words that name emotions, mental states or ideas. They do not refer to things that you can see or touch. जिसे कि तुम देख सकते हो या छू सकते हो. ये होता है abstract noun. अब देखते हैं concrete noun. Concrete noun are the names of material things that can be touched or seen. आप इन्हें छू भी सकते हो और देख भी सकते हो. इनको कहते हैं concrete noun.